Shall we start, ma'am? Can we start, ma'am? Okay. So Mahima, ma'am, shall we start? We can start, sir. Okay, perfect. So बच्चों लोग कैसे हैं आप सभी? कल का हमारा सेशन नहीं हो पाया होगा, हो पाया था एक्चुअली, so there was a network issue. Okay. So हमने अभी तक क्या क्या सीखा बच्चों लोग? Anyone? ओके, हमने सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में सीखा, और नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, वेरी गुड. राइट. ओके, सो हमने अभी तक जो सीखा वो था सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, और सैटेलाइट के प्रकार देखे, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल है, नेचुरल सैटेलाइट, राइट. हाँ, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट्स के क्या क्या प्रकार है, और आर्टिफिशियल कई सारे जो क्या कहते हैं, आपके बहुत सारे कंट्रीज है, उन्होंने अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है. तो हम कुछ कंट्रीज के सैटेलाइट देखेंगे जो कि फर्स्ट लॉन्च थे. उसके बाद हम आल्सो बात करेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होता है, सैटेलाइट का यूज क्या होता है, ठीक है, और सैटेलाइट के टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू मास. ये जो हमने अभी देखा आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये हमारा क्या है, बेस्ड ऑन क्रिएशन है. बेस्ड ऑन क्या है बच्चों लोग? बेस्ड ऑन क्रिएशन. नेचर ने बनाया या इंसान ने बनाया, ठीक है, इंसान ने. तो उस बेसिस पे आपका. चलिए, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. सर यस, the recording of the okay, so here we are live on YouTube, so recording is not required. Follow. Okay, so here today we are going to talk about types of natural satellite. Okay, we have already seen what is natural satellite, right? So now here you can see some examples of your natural satellite. What are those? Planets. So how many planets do we have? We have total at present 8 planets, right? Isn't it? Okay, can anybody say what are those 8 planets in order? In order, anyone? Sir, 8 ग्रह कौन कौन से हैं? You have to tell me in like in क्रमानुसार you have to tell. Yes, Navneet. Good afternoon, sir. Sir, Yes, Navneet, tell me. Yes, good sir, afternoon. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. And what was the 9th one? Pluto. Sir, Pluto, but it is now a dwarf planet. Okay. Okay. Mahima ma'am, from your side, any student want to answer this question? My question is that क्यों प्लूटो को हम ग्रह नहीं, मतलब कि इसे निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से? व्हाई साइंटिस्ट हैज रिमूव प्लूटो एज कंसीडरिंग एज अ प्लैनेट? व्हाट कुड बी द रीजन? आपके सोच के अनुसार क्या रीजन हो सकता है? एनीवन? व्हाई प्लूटो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम this 9 planets? There are many students are raising. क्योंकि जो प्लूटो है वह अपनी परिक्रमा जो करता है वह उसी लाइन में नहीं, मतलब जो सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं वो अपनी इक्विटी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन वह किसी जो ग्रह है उसकी लाइन में आ जाते हैं. ओके,
तो ऐसा होता तो हमारे कई सारे ग्रह कोलाय मतलब टक्कर खा करके समाप्त हो चुके होते ना, अगर वो इतना ज्यादा अगर अपना पाथ को मतलब कि डेविएट कर रहा है। होता कि नहीं होता ऐसा, राइट? यस और नो? दूसरे प्लैनेट से कोलाइड कर सकता है, राइट? एनीवन एल्स वांट टू आंसर? ऑडियंस साइड? Sir, can you repeat the question? See, my question is that why Pluto has been removed from the considering as that 9 planets were there. Now we have only 8 planets. Why that 9th one has been removed? Yes, Navneet. Sir, there are 3 factors for a planet to become a planet. So Okay. in that one factor, Pluto doesn't have, so they have removed as planet. So what are those factors? Can you tell me that? You can say Sir, that one factor. is orbiting around the sun. One is being like a round in shape like sphere. And one I think to have a clear orbit. To clear orbit. So you are saying like, see, it is revolving around the sun, right? Still it is revolving, right? Yes. So that is satisfying. मतलब कि अभी भी ये तीन कंडीशंस हैं जिससे आप बोल सकते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्रह होगा, प्लैनेट होगा। या एक तो सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, दूसरा क्या बोला आपने नवनीत? Sir, it should be like round sphere. राउंड स्फीयर, बट अर्थ इज नॉट राउंड ना, इट्स नॉट स्फीयर। अर्थ का जो आकार है वो क्या हम बोलते हैं गोले की तरह, बट वो गोला नहीं है, एक्चुअली स्फेरॉइड है, चपटा है थोड़ा। ध्रुव पे अगर हम बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा चपटा है, राइट? तो धरती भी तो फिर गोल नहीं है ना, अर्थ इज आल्सो नॉट काइंड ऑफ a sphere, right? Sir, Pluto is smaller than every planet. In fact, Earth's moon, it is smaller than Earth's moon also. Okay, so size you are saying, because of the size. Yeah, maybe. Yeah, one reason there is not a main, but it is also a reason. Okay, let me tell you. So मेन रीजन बच्चों पता है क्या है? पता है प्लूटो को कितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा, जैसे धरती को कितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में? 1 साल का समय लगता है, 365 दिन, राइट? 365 But what about days. Pluto? What about Pluto? It takes lot of time. Are you getting? So the major reason, जो मुख्य कारण है प्लूटो को इससे निकालने का, ये बहुत टाइम मतलब लेता है चक्कर लगाने का, ठीक है ना? तो हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। Pluto takes huge time to complete, but it's one revolution around the sun, because it's if you're talking about your perigee and apogee, एक टर्म होता है, ठीक है ना? एस्ट्रोनॉमी में हम एक टर्म की बात करते हैं, बोलते हैं apogee and perigee। क्या बोलते हैं इसको बच्चों लोग? apogee and perigee। Let me write. I'm writing at the bottom. Can you see that white color I'm writing? Yes, sir. Apogee and perigee, ठीक है? ये दो टर्म होते हैं। पेरिजी क्या होता है? जो सबसे पास की दूरी होती है। आपको पता है जब कोई ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है तो एक समय ऐसा आता है जब ग्रह सूरज के सबसे पास में होता है, यस और नो? और एक समय ऐसा आता है जब जो क्या कहते हैं, जो ग्रह होता है वो सूरज से सबसे दूर होता है, ठीक है? तो व्हेन अर्थ, लाइक सपोज इफ यू टेकिंग अबाउट अर्थ, so when it is the farthest point, apogee is the farthest distance when earth is away from the sun, and perigee is the smallest distance from the sun when earth is close to it. Is it clear? Are you getting, guys? Yes, sir. So Yes, sir. apogee is the largest distance and perigee is the smallest distance, ठीक है? तो मेन रीजन है प्लूटो आपका बहुत टाइम लेता है एक चक्कर पूरा करने के लिए, इसलिए उसको इस कैटेगरी से हम मतलब कि निकाल दिया गया। मेन रीजन आपका टाइम, जो टाइम पीरियड है इसका, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है? और भी अदर रीजन है, इसका जो पाथ है वो ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है ना? एक प्रॉपर पाथ में नहीं जाता है, तो दैट इज आल्सो वन अनदर रीजन। Okay, let's talk about types of natural satellites. So we have planets, we have asteroids, then we have what we have, guys? Comets. Okay, can anybody say what do you mean by asteroid and what do you mean by comets? Asteroid और comets में क्या difference होता है बच्चों लोग? Anyone? This is a like view. Yes? Sir, question repeat कर। आपका प्लैनेट तो समझ में आता है, प्लैनेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है, बट व्हाट अबाउट एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स?
एस्ट्रॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है? एनीवन? मैम, एनीवन? व्हाट इज एस्ट्रॉइड एंड व्हाट इज कॉमेट? ओके, देखिए आपने देखा होगा कि एस्ट्रॉइड मतलब बड़ा सा पत्थर टाइप में, ठीक है ना? आपने देखा होगा ना कई बार न्यूज में एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है बड़े आकार का, और वो क्या कहते हैं, तो वो धरती के ऊपर क्या होता है, अप्रोच करता है, ठीक है ना? तो एस्ट्रॉइड आप बोल सकते हैं एक ज्वार भाटा। नॉट ज्वार भाटा इज डिफरेंट थिंग, ओके, दैट इज कम्स इन स्पेशली इन लाइक सीज। सी एस्ट्रॉइड है लाइक सी प्लैनेट के अलावा भी आपने देखा होगा आपके आकाश में, स्पेस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें तैरती रहती हैं पत्थर टाइप में। आपने देखा, अगर आपने स्पेस से रिलेटेड मूवी देखा होगा इसमें ट्रेवल होता है, Yes, उसमें sir. देखा होगा कई सारे पत्थर टाइप में, बड़े बड़े पत्थर ऐसे ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है ना? तो आप बोल सकते हैं एक तरह से एस्ट्रॉइड क्या हो गया, पत्थर की तरह बड़ा सा पत्थर टाइप, ठीक है ना? और कॉमेट्स क्या होता है, कॉमेट्स में क्या होता है आपका एक एनर्जी भी होती है, ठीक है ना? एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट में डिफरेंस क्या है, एस्ट्रॉइड में इसकी एनर्जी नहीं होती है, कॉमेट्स में क्या होगा आपका एनर्जी होता है। आपने देखा होगा जब आप आकाश को अगर देखेंगे, कई सारे एप्स अवेलेबल है उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ जलती हुई लाइट टाइप, यू विल फाइंड आउट समथिंग इज लाइटनिंग इन द स्काई, वायलेट कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, like that, right? And when it is moving, you see sometime in a sky what will happen, something is coming very fast, very faster and approaching to the earth with some light, right? So what is happening, that light is nothing but it's burning because it's coming with very high speed. तो क्या होता है, जो पत्थर होता है उसके चारों पर फ्रिक्शन होता है, हमारा घर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊष्मा जनरेट होती है जो कि हमें लाइट के रूप में दिखती है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे प्लैनेट्स हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, कॉमेट्स हो गया, ऑर्बिट अराउंड स्टार सच एज सन, तो ये सारे सन का चक्कर लगाते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, तो इनको हम नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं। Our solar system has 8 official planets as well as millions of minor planets, asteroids, comets, and other objects orbiting around the sun. All of these can be thought of as a natural satellite. Now see, यहाँ पे 8 जो हमारे planets हैं हमने यहाँ पे mention कर दिया, 7 planets यहाँ पे हैं आपके, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto, right? Which one is missing, guys? Here, one is missing. It seems two are missing. Two are missing. What are those? One is Mercury and Mercury and Venus. Mercury, Venus. so these all are what? Now here you can see these planets. When you talk about with respect to Sun, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Mercury, these all called as natural satellite with respect to Sun. मतलब कि जब आप सूरज के कंपेयर में बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। बट इस अर्थ, अगर आप इस प्लैनेट की भी बात करें, इस प्लैनेट के भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसके चारों ओर चक्कर, जैसे चंद्रमा की बात करें तो धरती का कितने चंद्रमा है, अर्थ हैविंग ओनली वन मून, One moon. so that one moon what it do, it Revolve goes around the earth. So actually earth having one natural satellite, that is what moon. Mars having Yes, sir. 2 natural satellites, okay, Phobos and Deimos, and they are in irregular shape. Jupiter is one of the planet which having the highest number of what, Moons. that is what you can say natural satellite, okay? So this number can vary, it is not exactly 67 because every year what will happen, new thing will be found, find out, okay, scientists will discover new thing, so might this number will vary, 67, it may be 69 now, or maybe more than 70 also, but Jupiter is one of the planet which having the highest number of moons, that is you can call as a natural satellite. Is it clear? सभी को clear है? ऐसा कौन सा Yes, planet sir. है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, प्राकृतिक Jupiter. उपग्रह? Jupiter. Then what is the second number? Satellite. Saturn. Saturn. Okay. Saturn. Saturn. शनि ग्रह जिसे आप बोलते हो, right? So it is approximate, these numbers are approximate, okay, like one of the see, if you talking about see that Jupiter, one is like Ganymede, Callisto, right? These are the largest moon of Jupiter, and largest moon of Saturn is like one of the moon is Titan. What is that? Titan. Titan. And you can say Lepidus, Rio, and Dione, right? So these are the some of the name mentioned, and this number might can vary. These are not exact number because this will change time to time. Then Uranus, Neptune, and Pluto having the 5 moons, 5 natural satellites. Is it clear to everyone? Any doubt till so far? Yes, sir. Nothing to Yes, be sir. get doubt in this. Okay, fine. Let's go for the next slide.
Okay. So you can see here. Yes, sir. So here we have selected moons of the solar system with Earth for scale. Okay. So these are the scale model. Okay. So can you see here? I cannot zoom, but here, you know what you can see the size of the Earth on the picture. That is, 1:25. Can you see that here? Something is written. Let me write. It is written scale. Okay. 1 pixel. 1 fixed is equals to 25 kilometer. So pixel. What is pixel? See, when No, you look sir. at your screen, mobile screen or your laptop screen. See, if I ask you, you just take एक दीवार का example लीजिए. दीवार का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? What is the smallest unit of a wall? Anyone? Smallest unit of wall. आपका जो दीवार होता है ना, दीवार, उसका सबसे छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है? Anyone? Meter. नो इकाई. आई एम नॉट आस्किंग मीटर एंड किलोमीटर. सबसे छोटा जो होता है, जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी में बोलते हैं ना, सेल सबसे छोटा होता है ना, इजंट इट? वैसे अगर हम दीवार की बात करें, दीवार में सबसे छोटी चीज क्या होती है? Bricks, bricks, bricks. ब्रिक्स. वेरी गुड. ईट Brick. जिसे आप बोलते हैं, ईट, राइट? ब्रिक. उसी तरह यहाँ पे क्या है आपका 1 पिक्सल. जब आप किसी स्क्रीन की बात करते हैं, जैसे मोबाइल में, मोबाइल की स्क्रीन हो गई या आपके लैपटॉप की, तो उसमें जो स्क्रीन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल. 1 पिक्सल. Pixel. तो बहुत ही छोटा सा पार्ट. कई सारे पिक्सल्स मिलके आपका क्या होता है? एक स्क्रीन फॉर्म होती है और उसमें आप पिक्चर्स देख पाते हो. ठीक है ना? तो पिक्सल क्या है? छोटा सा, वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट थ्रू विच इफ यू कंबाइन मेनी पिक्सल इट विल बिकम अ स्क्रीन. आपने देखा होगा मूवीज, जब आप थिएटर में जाते हैं तो वहां पे जब स्क्रीन पे पिक्चर आती है तो आपको डॉट डॉट्स दिखते होंगे स्क्रीन पे, राइट? Yes, sir. इस तरह से वो डॉट डॉट्स मिलके क्या होता है, उसमें आप देख पाते हैं पिक्चर फॉर्मेशन होती है. तो ये जो स्मॉल डॉट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? Pixel. तो स्मॉलेस्ट. तो आप देखा होगा, आप जब भी कैमरा खरीदते हो तो आपसे पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है, राइट और नो? Yes, Right? sir. तो इट इज लाइक दैट. तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, ये क्या है? 1:25 है. मतलब 1 पिक्सल कितने के बराबर है? 25 किलोमीटर. तो यहाँ पे पता है, 1 पिक्सल, अगर हम अर्थ के ऊपर 1 पिक्सल ड्रॉ करें तो 1 पिक्सल कुछ ऐसा होगा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉट, मैंने एक रेड कलर का डॉट बनाया है Yes, sir. अर्थ के ऊपर. इसी तरह Yes, कई sir. सारे डॉट हमको बनाने पड़ेंगे पूरे अर्थ को कवर करने के लिए. आप देख पा रहे हैं मैंने डॉट्स बना रहा हूँ अर्थ के ऊपर. Yes, sir. Yes, sir. एक डॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पता है आपको? 25 किलोमीटर. अब यहाँ पे हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर? मैनी डॉट्स. सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 25. सो द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी बिग. Size of the earth is very big. Very big. So here picture it is looking small, but because they have taken down the scale down. Scale down model means the जो real model होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके डायमेंशन में क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं. लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एक समान नंबर से, संख्या से भाग करके उसको हम मतलब कि छोटा सा बना देते हैं. ठीक है ना? तो ये हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है. अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जो अर्थ का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, कितना होता है? किसी ने सर्च किया? Yesterday I asked this question. Last class I asked this question. Anyone? Diameter of, what is the diameter of Earth? Anyone? No, sir. व्यास क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? Diameter of Earth. और एटलीस्ट रेडियस आपने पढ़ा होगा ना सर्कल में, त्रिज्या, व्यास, diameter and radius. So any idea what is the diameter? What will be the diameter, approximate diameter of Earth? Diameter आपको पता है ना, एक छोर से दूसरी ओर, means from one end to another end you will be drawing a one line segment which will be passing through the center of that sphere, right? अगर हम यहाँ पे draw करें, if I draw from here to here, can you see that on Earth I have drawn white line? I hope you can see that. So this will called as a diameter. Yes, sir? Anyone more? Yes सर 1200 नहीं. Google अंकल से ढूंढ लिया आपने? नो सर. Okay, then why you have taken so much of time? सर 12. Okay, देखिए आपका जो डायमीटर होता है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 12,800. हाउ मच? किलोमीटर. मतलब कि आपको अगर एक, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड स्ट्रेट ऑन अर्थ, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू ट्रेवल? 12,800 kilometers. 12,800 kilometers. Okay,
And suppose if you are on the surface of the earth, अगर आप धरती की सतह पर और उसके सेंटर में जाना चाहते हैं, क्रोड जिसे कोर बोलते हैं आप, राइट, उसमें जाना चाहते हो, तो आपको कितना दूरी जाना पड़ेगा? कोई बता पाएगा बच्चा? धरती की सतह से सेंटर पर जाना है. How much distance you have to travel? It is radius actually. So how much it will be? Diameter half. So how much? 12,800 divided by 2. kilometers. So 6,400 6,400 kilometers. So आप अभी जहाँ पे kilometers. बैठे हो, आप अभी धरती पर बैठे हो, वहां से अगर धरती के अंदर जाओ towards the center, कितना दूरी चलना पड़ेगा आपको? 6,400 kilometers. So you can think it. How much 1 kilometer is? 1 kilometer is too much, right? We will not Yes, able to sir. talk nowadays in the 21st century, even for half kilometer also. Right? We'll not able to walk. We'll go for auto and something like that, or even use cycle. So think about 6,400 kilometer, how much big it will be. So you can think in that way, how much big the size of the earth will be, right? And when you Yes, talk sir. about Yes, sir. Jupiter, which is the biggest planet? Jupiter. Jupiter. Then you can think the size of the Jupiter, you know, size of the Jupiter is almost more than 10 times of the earth. Are you getting? So how much big Yes, it will sir. be? So here, these are the natural satellite planets have been mentioned, and their moons also have been mentioned here. Okay. Sir, Yes. can I ask one thing, that why in this picture Mercury and Venus are not there? Actually, the thing is, in this picture, they have not mentioned. There is no particular reason. And the thing is, I have kept this picture, or you can say in that way, I have taken that in that it's not there. There is no particular reason. Okay. You Okay. can keep here if you want. Okay. A space is not there, and that the picture which I keep in that it is not mentioned. But it's not mean I have neglected it. Okay. Okay, sir. Okay, fine. Okay. Shall I go for next? Any doubt, guys? No, sir, you can. No, sir. Perfect. Okay. So I hope that you are enjoying the session, not feeling bored. Okay. Now Yes, sir. we are going to talk about world's first artificial satellite. Artificial means जो कई सारी जो हमारे देश हैं उन्होंने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च करी होगी, राइट, उनके द्वारा बना करके. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट है हमने, आप देख सकते हैं. पहला कौन सा है? सोवियत यूनियन. It is about 1957. You know, is there any something is called Soviet Union now? Any country something? Anyone? See in history No, you sir. might, आप इतिहास में पढ़ते होंगे सोवियत यूनियन के बारे में. अभी क्या ऐसी कोई देश है क्या सोवियत यूनियन? No, sir. So, no, it's No, sir. country. Then what happened to Soviet Union, guys? Sir, it broke into different countries. Yeah, so there is a something approximate 1984. What happened? That it split it into Russia, something like that, right? It has Okay. divided. So some war happened, and then Soviet Union has broken out, right? So here, so it is the launch done by, when it was a very big land, and it was a like combination of so many countries. So here Soviet Union, that 1957, they have launched its first satellite, like first satellite, that is Sputnik 1, and for which they have used the rocket. It's called Sputnik PS. Like that, many of the countries are like United States. It is Juno 1 rocket they have used. And what is the satellite name? Explorer 1. 1. So these are the names you don't need to remember. You have to just remember for some of the countries which are, you know, like quite famous, like India. As you are from India, you should know that. So where's the India, guys? So in 7th number, So what is the first satellite? Have you first searched it Google? satellite is Rohini 1. It is a Rohini 1, RS1. Okay, and which rocket? Which rocket have been SLV. used? SLV. And you know, see, when you Google it, what was the first satellite launched by India? So the answer, you know what you'll get? Aryabhatta. You know why Aryabhatta is coming? Can you tell me why Aryabhatta is coming? Why Rohini is not coming in the? It is the first. Sir, because it big haven't picture. success. It is the No, first. Aryabhatta was success. It was No, launched. Rohini was not success. No, when I say first satellite launch, so first either it is success or what, that is a secondary. But first satellite launch means Rohini is only, right? But why Aryabhatta only comes? Why it is so? Anyone? It is space satellite. No, think. Answer is given on the screen itself. Sir, Yes, yes. so the rocket used is Indians for the Rohini 1. Very good approach.
Very approximate, like you said, absolutely correct. See, when you're talking about Rohini, which rocket have been used? SLV. SLV is the, what is the full form of SLV? Satellite launch vehicle. You know, in this, our former the president, Dr. APJ Abdul Kalam worked, right? When it was like 1984, something like that. Satellite launch vehicle. So when that Rohini launched, okay, on that time, see, for launching satellite, we need what? Vehicle, that is rocket. So for Rohini, we have used our own rocket. Are you getting? But when we launched, see, before the Rohini itself, Aryabhatta was already launched. But for launching the Aryabhatta, we taken that Aryabhatta satellite to some other country. It was, I think, Russia, or maybe I think it is. I have not exactly remember, but some other country have launched Aryabhatta, and the rocket was not ours. It was some other country rocket. So in that case, what you'll say? It was not our launch. Is it okay? Like first satellite was Aryabhatta, but launched by whom? Some other country. Other set, yeah, other But country. when you talk about Rohini 1, in this, Rohini 1 was our satellite, and the rocket which have been used, that was also ours. So in that scenario, we say the first satellite launched by India was Rohini 1, RS1. Is it clear? It's not Aryabhatta. So you have to make the clarity. When I ask first satellite launched by India, you have to say in this way. Like both are correct, Aryabhatta, but in Aryabhatta case, the rocket was not ours. Satellite was ours and it was launched by some other country. But in the case of Rohini 1, it was our own satellite, and the rocket which have been used to launch, that was also our own. Is it clear? And it was launched by the, like, it's from where? Tumba, India. Is it clear? And it was our own place. Might you heard the, like, sometimes see in the cartoon that initially when the India was developing its own organization, space organization, ISRO, so they were standing at the door of the NASA. NASA was just making the law of the that ISRO, that they will launch the rocket and satellite. They don't know even anything. They was making the law and kind of jokes like that. That kind of cartoon, if you search, you will find out. Now see that where the ISRO is. Okay. So initial days it was like in a church in the Kerala. There is a place called Thumba. So they have started the work in the church. Now you can see, still you can find out that if you go get a chance to visit Tumba, you can see that. And that is how our space program is started. Okay, from the Tumba. So now in our India, they are basically, okay, can you tell me, okay, let me ask one question. How many places nowadays that satellite been launched from India? Anyone? So one Chennai, Bangalore. Okay, Chennai, Bangalore. From Chennai it has been launched. Okay, then Bangalore. Sir, Sriharikota. Sriharikota, very good. Sriharikota. Okay, then any other place from where satellite used to launch? Anyone else want to answer? महिमा मैम, जो हमारी इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च होती है वो कहाँ से लॉन्च होती है? और आप देखिए जब भी न्यूज आएगा, आज जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक लॉन्च हुआ सैटेलाइट इंडोनेशिया के, इंडिया ने किया, तो उसमें एक नेम कॉमन रहेगा. One name will be always common. That is a place name. What is that? You know? Sriharikota. Sriharikota. And short form we called as a SHAR. What is that? SHAR. What is that? Sriharikota. SHAR. SHAR. It's in like what? Nellore in Andhra Pradesh. Okay. So this is most of the time India prefer this Sriharikota. And what is the second one? Anyone? Bangalore. Or only one launch pad we have? Only one place we launch the satellite. Yeah, Bangalore. Bangalore. No, Bangalore is not. Bangalore, you will never ever see Bangalore and Chennai any launch happen, like especially high altitude. Only two places are there in India. One is Sriharikota, that is in Nellore, Andhra Pradesh. Second one is? Sir, Kerala. Very good. Second one is, I already taken the name of it. Tumba. What is that? Tumba. That is in Thiruvananthapuram, Kerala, capital of Kerala. Okay. So these are the two places from where your launch takes place. Okay. There are no other places in India from where launch can be taken place or it happen. Only two places, Sriharikota and Tumba. And out of these two also, most of the time they will launch from Sriharikota. There is a reason behind of it. Okay. Now the thing is,
here another question comes. If you see the location of Sriharikota and Tumba, like some of you say Chennai and Bangalore, but launch doesn't take plus, like if you are talking about high altitude, very high, like 1000 kilometers, something like that, like how the ISS, International Space Station, 400 kilometers. For that, the best place is Sriharikota or Tumba. Even Sriharikota is the best one out of Tumba also. Now the question comes, why can we launch rocket or can we launch the satellite from Delhi or maybe some place like Mumbai? That kind of places can be launched? No, sir. Because no, sir. Not like this, not like this. Raise your hand. Ma'am, from a school side, Mahima ma'am, any student want to answer? I will repeat my question, guys. क्या इंडिया में हम दिल्ली से सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं? दिल्ली, लखनऊ या नोएडा, ऐसी जगह से सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते हैं? Anyone want to answer? No, sir. No, why? क्यों? Why? Shall I? वहाँ पर space नहीं है. Okay, if I launch, what will happen? If I launch from Delhi, what will happen? Suppose. Sir, shall I tell, sir? See, you raise your hand. You do not to ask me. You can raise your hand. So if I launch from Delhi, what will happen, guys? Or Lucknow, or maybe Kanpur, or maybe some other places. You can take a Jaipur. Why only Sriharikota and Tumba? Why they have selected this place? And even, not only India's, Sriharikota and Tumba, they are near to the coastal area, next to that, like within 1 kilometer, you will be having the sea, like your, what do you call this, Hind Mahasagar, right? The Bay of Bengal. Next 1 kilometer, you have the Bay of Bengal. So both of the station near to 1 kilometer range, 1 and 2 kilometer, you will be having the sea coastal area. Okay. And most of the, even SpaceX, your Elon Musk and NASA, their space station also near to the coastal area only. You will find out that. Now the question is, why this launch station is near to those places only. Like Delhi, we cannot develop a station in Delhi or Lucknow or maybe Jaipur. What could be the reason? Say some of the students said that like so much, there is no space. Anyone? Yes, school side hand has raised. Sir, question repeat करना. No, sir. हाँ, बोलिए. बोलिए बच्चे. Ma'am, there is a echo is coming from voice is getting repeated. सर श्रीहरिकोटा और बैंगलोर से हम अपने जो रॉकेट्स है वो लॉन्च इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पर लॉन्च नहीं, बैंगलोर नहीं है, बैंगलोर से हम नहीं करते हैं. बैंगलोर में हमारा सेंटर है ऑपरेट करने के लिए. बैंगलोर चेन्नई से नहीं करते हैं. ठीक है. लेकिन श्रीहरिकोटा और जो दिल्ली और लखनऊ है वहां पर कोई भी लॉन्च पैड नहीं है, इसलिए वहां से हम रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर सकते. नहीं, मैं कह रहा हूँ बना देते हैं. चलिए बना देते हैं दिल्ली लखनऊ बना देते हैं गवर्नमेंट से बात करके. कैन वी डू दैट? अगर हमने बना दिया तो क्या हम लॉन्च कर सकते हैं? और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके. एनीवन एल्स? I think hand has raised. Yes. So because मैंने जितने भी आज तक रॉकेट्स को लॉन्च होते हुए देखा सोशल मीडिया पे, वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में लॉन्च होते हैं. क्या बोल, फिर से रिपीट करिए बच्चे. सर मैंने जितने भी आज तक रॉकेट और सैटेलाइट्स को लॉन्च होते हुए देखा है सोशल मीडिया पर, वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में लॉन्च होते हुए देखा है. क्यों? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों? व्हाट इज द रीजन? इवन नासा के भी जितने लॉन्च पैड्स हैं वो कोस्टल एरिया के पास में ही है, पता है आपको. और एक चीज और होती है, पता है, आपका जो रॉकेट का डायरेक्शन है वो ईस्ट में, हमेशा रॉकेट को ईस्ट के डायरेक्शन में लॉन्च किया जाता है. उसका जो नोज होता है ना, वो किस डायरेक्शन में होता है, पता है आपको? ईस्ट. आपकी धरती कैसे घूमती है? कौन से डायरेक्शन? धरती अपने अक्ष पे घूमती है ना, कौन से डायरेक्शन से घूमती है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट, राइट. तो सेम डायरेक्शन में हम रॉकेट को भी लॉन्च करते हैं. तो एक्चुअली आपका जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ऐसे जाता है वेस्ट टू ईस्ट. तो ये आपका हो गया. अगर हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है ना. वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट टू
अगर ऐसे देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट आ जाएगा, इधर से देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है ना। तो उसी के डायरेक्शन में हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा? सर हाँ बोलिए। सर जितने भी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं वो कोस्टल एरियाज में इसलिए करते हैं ताकि जो जितने भी रॉकेट्स है वो अगर दोबारा क्रैश हो तो वो सेफ्टी पर्पस के जरिए वो समुद्र पे गिर जाए, जो very जिससे कि good. हमारी जान माल के नुकसान ना हो। वेरी गुड। सो आपका आंसर आपका करेक्ट है। सो बच्चों जैसा कि बताया यहाँ पर, देखिए अगर हम दिल्ली में लॉन्च कर दें, अगर इनकेस आपका रॉकेट क्रैश हुआ तो किसी की छत पे गिरेगा जाकर के, किसी के इधर ऊपर, ओवर टू द हेड, एंड हाउ मच, कितना नुकसान होगा, राइट। आपने रॉकेट तो लॉन्च कर दिया और वो लॉन्च किया स्पेस के लिए, लॉन्च हो गया किसी के घर पे, राइट। यू हैव लॉन्च फॉर सम अदर पर्पस बट इट हैज लॉन्च ऑन समवन हाउस, then what will happen? So for the burn. safety purpose, in case like for keeping the safety into mind, तो क्या होगा अगर इन केस अगर आपका रॉकेट क्रैश होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो कहां पर गिरेगा? समुद्र में जाके गिरेगा। वहां पे हमें कोई जान मान का नुकसान नहीं होगा, विल नॉट गेट एनी लॉस, राइट, स्पेशली ह्यूमन लाइफ। एंड वन मोर थिंग, यू नो, जो रॉकेट जब लॉन्च करते हैं Voice. उसका डायरेक्शन क्या होता है? ईस्ट की तरफ होता है। किधर होता है बच्चों लोग? ईस्ट की तरफ होता है। ईस्ट की तरफ। क्यों होता है ईस्ट की तरफ, पता है आपको? व्हाई इट इज ईस्ट डायरेक्शन, व्हाई नॉट वेस्ट? It is nearby equator. तो अगर आप नक्शे में देखेंगे, भारत के नक्शे में, राइट, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो भारत का नक्शा कैसे रहता है? तो आपका जो ये आपका तुम्बा है, ठीक है ना, ये एक्चुअली हम नोज इस तरह से रखते हैं कि हमारा रॉकेट समुद्र की तरफ जाए, ना कि उसके उल्टी दिशा में जाए, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोई लॉन्च पैड बनाएंगे वो समुद्र के पास में बनाएंगे, और जो रॉकेट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? समुद्र की तरफ होगा, ना कि उल्टी दिशा में, ठीक है। अब Sir, हाँ बोलिए हिस्बा। sir, मेरा that area, यस बोलिए। in public area, because of the noise, we don't make the that satellite launch place. Not noise is not a main reason. Main reason is safety. See, if you in case see many time crash happen, okay, in case if rocket crash, you know how much, कितना नुकसान होगा किसी के वो रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां पे गिरेगा तो पता है आपको बहुत बड़ी घटना हो सकती है, ठीक है। तो मेन रीजन इज to launch it is away from the residential area where people doesn't like they don't have like house and at all like that area. Like तो forest. अगर आप समुद्र की तरफ से मैं समुद्र के पास से लॉन्च करोगे तो इन केस अगर क्रैश भी होता है तो समुद्र में गिरेगा, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, समझ रहे हो आप? हमारा जो खर्चा रॉकेट बनाने में लगा है वही वही बर्बाद होगा, इसी में ही होगा। बट अगर हमने कहीं दिल्ली या लखनऊ से लॉन्च कर दिया तो ये पक्का कहाँ गिरेगा? किसी के घर के ऊपर गिरेगा जाकर, इन केस अगर क्रैश हुआ, राइट। तो बहुत जान माल का नुकसान होगा। दूसरी एक चीज बहुत और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आपने, जो हम लॉन्च पैड बनाते हैं वो कोस्टल एरिया में बनाते हैं। अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए, इंडिया का अगर देखें हम कोस्टल लाइन, इंडिया हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, राइट। आपका गुजरात से स्टार्ट होता है, इधर कहाँ तक जाता है? वेस्ट बंगाल जाता है, राइट, इजंट इट? क्योंकि भारत का क्या कहता है, नीचे Yes, वाला sir. हिस्सा पूरा समुद्र से हुआ है, तो उसका जो कोस्टल लाइन है बहुत है। तो ऐसे तो हम बहुत सारे लॉन्च पैड बना सकते हैं ना कोस्टल एरिया में, लाइक गुजरात में भी बना सकते हैं क्योंकि कोस्टल एरिया पे है, कच्छ द्वीप है आपका। फिर इधर क्या आ But जाता है, sir, the मुंबई हो गया, main गोवा हो गया, इवन अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में एक्चुअली आपका क्या है, तमिलनाडु में एक्चुअली अभी बन रहा है, ठीक है ना। तमिलनाडु में कोई भी लॉन्च पैड नहीं है आपका, अभी गवर्नमेंट ने मतलब कि अलॉट किया है तो वहां पे बना रहे हैं, श्रीलंका के पास में जहाँ पे रामेश्वरम वाला एरिया है ना, उस एरिया में। बट अभी तमिलनाडु में आपका कोई भी लॉन्च पैड नहीं है, आपका केरला में है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो तमिलनाडु का तो पूरा लाइक एक तरफ का बॉर्डर पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर जाएंगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वो भी कोस्टल एरिया में आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने बोला हम लॉन्च पैड को कोस्टल एरिया के पास बनाते हैं, तो क्यों ना हम खूब सारे लॉन्च पैड बना दें सारे सारे स्टेट्स में, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एनीवन? so can I? Where can I? So can I? यस हिजबा। So sir, it's because the main thing is
We want peace. There are many places, but on these places, the public area are the most. But there are two places they have many public area, so that's why we make there. We haven't have their public area, and coastal area are also there, so that's why. No, it is nothing related to public area. If you look at the coastal area of any state, it will be like a what? Less populated only. Near to ocean, government will not allow to have the resident at all. So it is equal for all the states. Are you getting? Sir, shall I? Yes. Sir, because when the rocket launcher, it will be fire more, na sir. When they are in the coastal areas, they are not their forest, na sir. No, my question is that coastal area is there in West Bengal also, na? So why not to have one launch pad in West Bengal? Why only in Sriharikota and Tumba? Why not in Mumbai? Mumbai also come in coastal area, na? So we can make one launch pad, but government will not do that. Government will do only in Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Kerala. These three states only. Why? Why not Maharashtra and why not this West Bengal or even Odisha also? Sir, I guess the public is less. No, not like population, not like that. See, near to the coastal area, there is no population. You take irrespective to any state. यहाँ जनसंख्या की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. कोस्टल एरिया के पास में जनसंख्या गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है रेसिडेंस बनाने की. आप श्रीहरिकोटा जाओगे ना तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर तक घर नहीं मिलेंगे. बहुत छोटे छोटे घर मिलेंगे. आपको गांव का फीलिंग आएगा, पता है. श्रीहरिकोटा जाओगे तो 10 किलोमीटर तक कोई घर बड़े बड़े नहीं बने हुए. बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट परमिशन. बिकॉज like almost it is in the range of 10 kilometer, like 1 by 1 or 2 by 2. No residence should be there. Where is the launch pad? Because it can be a dangerous and harmful. Yes, anyone want to answer? Sir, Yes. sir, they are near to the equator. Okay. How you get it, Navneet? So this is the correct answer, guys. There is an advantage. Like, see, we should plan our launch pad in such a way that it should be near to the equator. So if you look at this Tamil Nadu and Kerala and even Andhra Pradesh, this Sriharikota, they are close to the equator. But this Mumbai, West Bengal, they are quite away, like far away from the equator. So another reason is whenever you are building a launch pad, you should keep the thought in mind that it should be close to the equator. So you will find out this also. You see, you look at most of the, see, like Japan. Do Japan have their own launch pad? See, if Japan want to launch satellite, they don't have their own No, launch sir, station. they haven't. They will go to the NASA or they will go to the SpaceX. They will ask them to launch. Indonesia. Do Indonesia have any launch pad? No, sir. No. Why? Because they don't have any coastal area. You look at the map. Are you getting? So whatever the countries come in the northern part, most northern part, they don't have like their own launch pad. They will prefer either India, because India half part is coastal area only. Otherwise, NASA also, Aryan Space, there is a place name is called Aryan Space. Aryan Space, you can search it. So most of the things launch from there. Okay. So they are actually close to the equator. Now the question comes, why we are talking about equator? Why we have to, so see, now it is clear where to build the station. This part is clear to everyone? Yes, sir. ये चीज क्लियर हो गया बच्चों लोग? Yeah. कि हमें जो लॉन्च पैड का स्टेशन है कहाँ पे बनाना है. एक तो कोस्टल एरिया के पास बनाना है, और क्या चीज करना है, कोस्टल एरिया के साथ साथ नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में होना चाहिए, राइट? सो दैट आर द टू रीजंस. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई नियर टू द इक्वेटर? नाउ दैट इज योर होमवर्क. Sir, because you have to search and tomorrow tell me that why, what is the advantage of building a launch pad, okay, launch station near to the equator. Okay, that is your home task. Is it clear to everyone? Question Sir, shall I tell? No, that is a homework. Vande Mataram is going on, so students will sing that. Yes, ma'am. Okay, national anthem.
So we can start now. ओके ओके। सो होमवर्क क्लियर है सभी बच्चों को? दो रीजन है स्पेस स्टेशन बनाने के, एक ओशियन कोस्टल एरिया के पास, दूसरा इक्वेटर के पास ना। ओशियन का रीजन आपको पता है क्यों हमें कोस्टल एरिया के पास बनाना है, क्योंकि इन केस अगर कोई क्रैश होता है तो समुद्र में गिरेगा, राइट? Yes. But what is the reason why we have to make a space launching station near to the what equator? What is the reason? Okay, you have to search and tomorrow tell me. Let me go to the next now. Okay, so next, so these are the, you can see here some of the world first artificial satellite launched by the different countries. India's first satellite, artificial satellite, was Rohini 1 RS. Okay, fine. Okay, let me go to the next. So student, can you tell me now what was the name of the first satellite launched by India? What was the first satellite launched by India? Sir, Rohini, sir. Rohini. Okay, Rohini 1 RS1. RS1. Now I'll be talking about application of satellite. Okay, what we are going to talk about now, guys? Now the thing is, we know what is satellite, what are the different types of satellites. Now the thing is, if you are making your own satellite, what is the purpose? What is the purpose? If it is like artificial, okay, you know, even natural satellite having also some purpose. Yes or no? Like moon. Yes. Do moon help us in some way? क्या चंद्रमा हमें हेल्प करता है कि धरती पर? Light. ओके, लाइट, नथिंग रिलेटेड टू लाइट। शुरुआत में एक बच्चे ने बोला था उसका आंसर, इफ यू रिमेम्बर, धरती पर कुछ चीजें होती हैं वो चंद्रमा के कारण होती हैं। It is also a satellite. This is not a correct way to answer, scholar. You have to raise your hand, right? Okay. चंद्रमा के कारण धरती पे कुछ चीजें होती है, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, और हमारा जो धरती पर जीवन है वो आसान नहीं होगा। तो प्राकृतिक, नेचुरल सैटेलाइट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। नाउ बताइए, कोई बच्चा बता पाएगा चंद्रमा के कारण धरती पर क्या होता है और जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हाँ, बोलिए बोलिए। सर, चंद्रमा के कारण जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं समुद्र पर, जिसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं वो दिन में 2 बार उठती हैं और दोबारा समुद्र में चली जाती हैं। ओके, तो ज्वार भाटा हमें अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है? ज्वार भाटा से हमें क्या मतलब कि हेल्प होता है? कोई हेल्प होता है हमें क्या? कोई आइडिया? नो सर। तो बच्चों, हेयर यहाँ पे क्या है, चंद्रमा जो होता है ना, उसके ग्रेविटेशनल पुल और पुश के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा जब समुद्र में जाएंगे तो वो जो वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे उठती रहती हैं, राइट? वो वेव्स कैसे आती हैं? कोई नीचे बैठा रहता है समुद्र के अंदर, somebody sitting inside the ocean and pushing up and pulling down, so it is creating the waves. Is it like that? No, How that is sir. creating? It is because of the moon's gravitational pull or push, right? तो मून के कारण, चंद्रमा के कारण, ये इसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ऊपर उठना और नीचे जाना, ठीक है ना? इसके कारण क्या होता है, हमारा एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है ना? हमारे इन्वायरमेंट में जो एनर्जी है और हम जो यूज करते हैं, जैसे कि आप क्या बोले, इवन विंड एनर्जी अगर आप बात करें, या जियो थर्मल एनर्जी आपने पढ़ा होगा, धरती के अंदर से हम क्या करते हैं, एनर्जी को लेकर के उसको यूज करते हैं, राइट? जियो थर्मल एनर्जी, राइट? नॉट सोलर एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट, ज्वार भाटा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेव्स, ये जो ऊपर उठती है, इसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं? इसको इवन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसको एक हाइट पर ले जा करके क्या कर सकते हैं हम, हाइट से गिराते हैं तो फैन रोटेट होता है, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा नेचुरल सैटेलाइट एक तरह से क्या है, हमारा हेल्पफुल होगा। उसी तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी यूजफुल होता है। तो उसका क्या उपयोग है, एप्लीकेशंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन मेंशन है।
3 एरियाज में डिवाइड किया है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज. व्हाट आर दोस 3 एरियाज? Sir, Urban area, urban means city area, okay. rural, Rural area, that is what like a gaon, village, like that. And remote means the place where nobody lives, Yes. like you go to the in like in middle of the ocean or some forest, that is called remote area. And the place where a human cannot reach, okay. So that kind. So like see, in the when you're talking about application of satellite in urban area like city, so in our day-to-day life, broadcasting, you know what is broadcasting? Anyone? How many of you watch news? So news is nothing but broadcasting, one kind of let's see, you are sitting in Hyderabad or Chennai or maybe some place and listening the other place news from across the world, right? So how you are getting? You are at your place and getting the information from some other place. How it is possible? That is possible because of the broadcasting. So for that purpose, like television, you can say, what you see na 3D, that you recharge your what do you call your dish, D2H, DTS something, right? You recharge and then you have the like what your movies and news and at all, right? So those all comes under broadcasting. That is possible because of the satellite. Did you remember when you go 10 years back, you know, when I was in 9th class, what I used to do, you know, in my home there was a black and white TV, and on the time current will be coming like throughout the only for 3 hours. It will come 3 hours only. So what we do, we'll have a battery, kind of rechargeable battery. And on the time there was a famous serial come Shaktiman and Junior G. How many of you know that? Shaktiman and Junior G. How many of you are aware of it? Yes, sir. Yes, sir. I know. So on that time, now there is craze has gone, but on the time I was very curious about to watch it. What will happen next episode? Something like that, because they will give the twist when they will finish half an hour session. The last they will put some twist. Nowadays also in the serial, so it will make more curious about it. So we used to do that. We go to the charging the battery and come back and we'll think about it. Let's see full like this battery will work for half an hour or not. It will get discharged and I'll able to watch full serial or not. It was happening like that. On the time, on the day, broadcasting was very difficult, you know. Even on the day, you know, in the communication, some PCO was there, you know. PCO, now everybody having phone, they don't have to pay, and like what, it is almost 1 month free, you can do the free call. But 10 years back when I was in 9th and 10th, even in 6th 7th, you can say, on the time there was a PCO booth will be there, telephone booth, and there will put 1 rupee coin inside of it, and then what, for one 60 seconds 1 rupee. So like 10 seconds before it will give the beep, again I will put into 1 rupee, then again 60 seconds. It was like that, like 10 years back. So that all was very difficult on the time. Now the technology has improved. Now satellite has like have been so many satellites have been launched, so everything has improved. Technology has improved. So now here you can see broadcasting means like TV and serials, whatever you watch. Communication, like see some person is sitting in USA or sitting in like what India and talking over to the call. How it is possible? That is all because of the satellite communication. Then disaster rescue. Now see somewhere if some tsunami has come and maybe earthquake has come, so physically human cannot go to that place, right? So what we can do, with the help of satellite, you see in the news they will show the picture, this place has got more affected, this building has collapsed, some pictures will come, colorful pictures, right? So that all possible because of the satellite. Disaster rescue in the urban area. Then again communication, so in the rural area, you know, gaon सॉरी, गांव में क्या होता है, आपका सिग्नल ठीक से नहीं आता है, राइट? तो वहां पर भी क्या है, कम्युनिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो रूरल एरिया में मान लीजिए गांव में अगर कोई बीमार पड़ा, किसी मान लीजिए किसी को क्या हुआ, हार्ट अटैक आया, तो उसको सिटी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और मे बी ब्लड चाहिए, तो क्या होगा, तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है, उससे क्या होगा, आपका जो भी मतलब कि जो भी ट्रांसफर होना है वो फास्ट होगा। ट्रैकिंग आपने देखा होगा जीपीएस के बारे में, आजकल ओला और उबर इन सबको करते, तो आप पता कर पाते कहाँ पर है, कितने मिनट में आएगा, कितने मिनट में आपको पहुंचाएगा। दैट इज ऑल ट्रैकिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देयर यू हैव लाइक समथिंग कॉल्ड altitude and what there is a something another altitude and like it is height something, right? It is like I'm not getting that word. It is one is altitude, that is vertical height,
then you have something called, two more things are there. I'm not getting that word. I'll tell you. Okay, so based on these three terms, okay, longitude, latitude. If you heard that, your GPS, you can track anyone basis of longitude, okay, latitude, and height. These are the three parameters through which you can track anyone, where that person is, what he's doing. Okay, location you can track based on this. We'll discuss about it. Then maritime affairs. Like, see, you have seen some of the other, like in the, especially happen in the border area, like Sri Lanka and Indian border. If you see, many times you'll find out news. Some of the fishermen come into that border of this what Indian border, right? So Indian army will arrest the farmers, this fishermen, and same if Indian fishermen go to the border of Sri Lanka. So what will happen? They will arrest to the fishermen, right? So that can be captured. Those all are like in the ocean, coastal area, in the mid of the ocean, like borders will be there. So if some other country, a ship is coming inside the our border, so we can track with the help of satellite. Then emergency and safety, like in the flight also, right? If there is any emergency and safety, through the satellite communication happens, because in the emergency case, our communication will get destroyed. So only one option will be there, satellite communication. So these are the some of the application of satellite. Okay, so okay, and the last one is satellite types, that is according to the mass. We have basically what? So application we have done. Is it clear to everyone? Applications, everyone is clear? Yes, sir. Good, perfect. Now the today's last topic which we are talking, then we'll wind up the session, that is satellite types according to the mass. The previously which we have talked, what is that? Types of satellite, natural and artificial. That is based on what? Based on creation. नेचर ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है. So based on creation, what are the types of satellite, guys? Types of satellite are two based on creation. What are those? Natural and Natural satellite, artificial. artificial satellite. That is based on creation. Now based on mass, based on mass, or you can say based on size, because size will be heavier, then mass will be also heavier, right? So based on mass, or you can say based on size. So you have three types. What are those? Large satellite, medium size satellite, size satellite, small satellite. Now, what is large satellite? So the satellite which having their mass, or you can say like here kg we are using. So mass, we have generally weight, but we are talking here kg. So mass. So if your mass is more than 1000 kg, if the mass of the satellite more than 1000 kg, अगर आपकी satellite का भार जो है, ठीक है ना, वो 1000 किलोग्राम से ज्यादा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? Large satellite. Like if you talk about your International Space Station, so the weight of that International Space Station, that is like artificial satellite, is more than it is in tons. Okay, so you can call as ISS is one of the example of large satellite. Is it clear? Yes, sir. Now medium size satellite. What is medium size satellite? ऐसी satellite जिनका जो भार होता है वो 500 से 1000 किलोग्राम के बीच में होता है. The satellite which having the mass in between 500 to 1000 kilogram. Is it clear? Yes, sir. Now यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कोई सैटेलाइट है उसका भार एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम है, तो उसको किस में रखेंगे? लार्ज में रखेंगे या मीडियम में रखेंगे? So what you think, guys? किस में रखेंगे? Medium. It will come in large only. Okay. If it is 1000 and more than 1000, it will come under large satellite. And if it is 500 to 1000, means you can include 500 also, it will come under medium. And what is small satellite? Less than 500. Small satellite is what? Less than 500 kilogram. So less than 500 kilogram की जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो सारी किस में आती हैं? स्मॉल सैटेलाइट. अब स्मॉल सैटेलाइट में आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आपने सुना होगा नाम, पिको सैटेलाइट, फेमटो सैटेलाइट, क्यूब सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट. ठीक है. तो मिनी सैटेलाइट क्या होता है? ये मिनी, माइक्रो, नैनो, क्यूब, पिको, फेमटो, ये सारी किसमें आएंगी? स्मॉल सैटेलाइट. स्मॉल सैटेलाइट. बट अब मिनी सैटेलाइट भी क्या होता है? अगर कोई सैटेलाइट है उसका भार 100 किलोग्राम से 500 किलोग्राम है, तो वो किसमें आएगा? मिनी में आएगा. माइक्रो क्या होगा? 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक. नैनो क्या होगा? 1.5, मतलब कि 1.5 किलो से लेके 10 किलोग्राम तक नैनो. क्यूब क्या होगा? 1 किलोग्राम से लेके 1.5. एंड पिको क्या होगा? 100 ग्राम से
1 किलोग्राम। 1 kilogram. और लास्ट क्या हो गया, फेम्टो। अगर 100 ग्राम से कम है, मतलब कि ये बहुत लाइट वेट हो गया, 100 ग्राम, मतलब कि एक सेब के भार के आकार का संतरा ले सकते हो आप, संतरा के साइज की सैटेलाइट, वो क्या होगी, फेम्टो सैटेलाइट। Femto इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. So that is what for today's class, guys. In the next Yes, sir. class, we'll be talking about systems of satellite. Systems of satellite. तो Satellite. अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अब मिनट्स ऑफ नोट्स के बारे में बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे सेशन कि हमने आज क्या सीखा। कोई बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, एनीवन? एनीवन? यू डोंट नीड टू हेजिटेट, आपको घबराना नहीं है। अगर कोई डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, आपको घबराना नहीं है। हर डाउट एक इम्पोर्टेंट डाउट होता है, राइट? तो छोटा है या बड़ा नहीं, आपको नहीं सोचना है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन? No, sir. Perfect. No, sir. So let's conclude the today's session. तो कौन बच्चा आगे आएगा, बताएगा कि आज हमने क्या सीखा? What we have learned today? Anyone? Guys, please come forward. You can raise your hand. Anyone? Yes, from SVM Rajnagar. Yes. तो आज हमने सीखा कि प्लैनेट्स के पास कितने मून्स हैं, किन किन प्लैनेट्स के पास कितने मून्स हैं उनके, और अर्थ का डायमीटर, और फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट, और रीजंस हाउ टू मेक लॉन्चिंग पैड नियर टू कोस्टल एरियाज, एंड urban areas और rural area और remote areas में जो satellites होती हैं उनका क्या रोल होता है। Okay, good. Then anything else? और satellites का जो उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है उनके बारे में। श्रेणी जैसे कि किसके आधार पर? सैटेलाइट, स्मॉल किसके सैटेलाइट आधार पर? एंड, हाँ जी, किसके आधार पर? मतलब उनके वेट के आधार पर। भार, वेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे। देयर इज अ टू डिफरेंस, मास एंड वेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपने साइंस में पढ़ा होगा, भार, वेट अलग होता है, मास अलग होता है। मास में हम जी को लाइक वो होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को इंक्लूड नहीं करते हैं। वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, एंड मास क्या होता है, सिर्फ उसका जो ओन वेट है, ग्रेविटी को अगर निकाल देते हैं। यहाँ पे हम भार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वेट की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन। तो भार के आधार पे जो हमारी उपग्रह होते हैं आर्टिफिशियल, वो 3 होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? लार्ज, मीडियम Medium. एंड स्मॉल। Small. 1000 से ऊपर होगा तो लार्ज होगा, 500 से 1000 के बीच में होगा या 500 होगा तो मीडियम होगा, और अगर 500 से कम होगा तो स्मॉल। अभी स्मॉल में भी हमारे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, मिनी, माइक्रो, इस टाइप में, राइट? अच्छा, आपने एक चीज मिस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने, एनीवन वांट टू इंक्लूड? जो कि आपकी एक्चुअली टास्क है, मैंने कुछ दिया है आपको करने के लिए, वो भूल गए, वो इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। Region. Sir, why they will build nearby equator? यस, वेरी गुड। सो आपको सर्च करना है, आप देखेंगे, आप टुडे पहले यार रिसर्च करिएगा, आप सर्च करिए दुनिया में कितने लॉन्च पैड हैं, किस किस देश के हैं, और कौन कौन सी लोकेशन पे, ये सर्च करिएगा। आपको पता चलेगा वो जो लॉन्च पैड है वो ज्यादा से ज्यादा कोस्टल एरिया के पास में है, और कहाँ पर है, इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर और कोस्टल के पास में तो समझ में आता है कि अगर वो फेलियर होगा तो समुद्र में गिरेगा तो उससे नुकसान नहीं होगा, बट व्हाट इज द रीजन वी हैव टू एस्टैब्लिश स्पेस स्टेशन, मींस लॉन्चिंग स्टेशन नियर टू द इक्वेटर, ठीक है? I will interrupt you in between. We have to close this class. Time is हाँ, over. yes, right. Okay, student, then we'll see you tomorrow. We'll just wind up the session today. I hope that you have enjoyed. And if you have missed the session, and if you have missed something, there is a recording is available. The session is parallelly going live, so you can look into that also. Okay. Thank you so much, student. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.